Hello dear all, in this video we will learn about the basic formatting tools of Microsoft Word. Basically we will learn about the two groups, that is font group and paragraph group of the home tab. Let's see how many groups are there in the home tab first. You can see here in home tab there is a clipboard group. We get different tools like cut, copy, paste, etc. under this clipboard group. Next is font group. We get tools to work upon fonts. Paragraph group to work upon paragraph. Styles group, which is used to stylize the font. And editing group, in which we get find, replace, select, etc. tools in order to work upon our document. Let's start with the font group. You can see here this is the font group. We get bold, italics, underline, strike through, subscript, superscript, change case, font size, text highlight, font color, font, grow font, shrink font, and clear formatting tools under this group. Coming on to paragraph group, this is the look of the paragraph group. We get the alignment tools, that is align text left, center, align text right, justify, line spacing, shading, bottom border, bullets, numbering, multi-level list, decrease indent, increase indent, sorting, and show or hide tools in this group. Now we will learn about each one of these tools one by one. Let's start with the font group. This is situated under the home tab. This is the font group. We will start with the style font style option for first. Let's select the text and then click the drop down arrow in this tool, and whichever style is appropriate we have to click that. And then we're coming on to font size. Just select the text, then click the drop down arrow and scroll through the different size and select the appropriate and most suited size for your text. In this way you can see both style and size of the text is changed. Now we will learn about the different tools that are bold, italics and underline. Again select the text and click the bold option. You can see the text has been become bold in appearance. Now for italics, just select the text and click the tool and you will see the text has tilted in appearance. All the letters became tilted. Now again select the text and click the underline tool. A line will come beneath the text. टेक्स्ट के नीचे एक लाइन आ जाएगा. दिस इज नोन एज अंडरलाइन टूल. नाउ द नेक्स्ट टूल इज स्ट्राइक थ्रू. जस्ट सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड क्लिक द टूल एंड यू विल सी टेक्स्ट के बीचों बीच एक लाइन आ जाएगा. द टेक्स्ट विल गेट स्ट्राइक थ्रू. अगेन सेलेक्ट इट एंड अगेन क्लिक द टूल एंड इट विल डिसअपियर. Now we will learn about the subscript and superscript tool. Let's write a digit for that. The subscript tool will place the digit which you have selected in small size beneath the text, beneath the adjacent text. You can see computer के नीचे ये one small size में नीचे आ गया. Now superscript will do the reverse of that. You just have to select it and click the superscript tool and it will go above the text, above the neighbor text. You can see computer के ऊपर में ये one आ गया. So this is the concept of superscript and subscript tool. Now the next tool is grow font and shrink font tool. As the name suggests, grow font will grow the text, that means increase the size of the text, and shrink font will decrease the size of the text. You can see here. Now the next tool is change case tool. Just click the drop down arrow and you can see here there are 5 options available here. For that, let's just select the text. We will have to select the text
and go to the change case tool and let's apply lowercase, and you can see here the text has become in lowercase, मतलब ये small letters में आ गया. Let's increase the size of the text and again select it. Let's go to the tool and apply uppercase. सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स आप देख सकते हो कैपिटलाइज हो गए, अपर केस में आ गए. Let's go again and apply sentence case. Sentence case में first letter of the sentence remains capitalized and you can see it has been applied. Again go here and use capitalize each word. This tool will capitalize each word. इंडिया का I capital, इसका I, my का M, motherland का M. Now again go to the tool and click toggle case. It will reverse the current situation of the sentence. You can see here जो केस अपर में था, जो लेटर अपर लेटर में था वो लोअर में आ जाएगा and lower letter will come in upper case. Now we will understand the text highlight color tool. Just select the text you want to highlight and click the drop down arrow. Select through the color palette and click. And you will see कि selected text के आजू बाजू वो color apply हो गया. Now let's select another text and go to font color. You can change the font color. You can take it as a pen. ये एज अ पेन होगा और जो टेक्स्ट जिस पेन से जिस कलर से लिखा हुआ है वो चेंज हो जाएगा. यू कैन सी हियर दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज टूल्स. नाउ दिस वन इज द क्लियर फॉर्मेटिंग टूल. इट विल क्लियर ऑल द फॉर्मेटिंग डन ऑन द सेलेक्टेड टेक्स्ट. यू कैन सी हियर साइज से लेकर कलर तक हर फॉर्मेटिंग चेंज हो गया. अगर आप रिवर्स करना चाहते हो तो अंडू का बटन दबाओ, इट विल गेट रिवर्स्ड. Now we will learn about the paragraph group. Here we will understand about the alignment tool first. Let's select the text. एक छोटा text लेते हैं and let's apply alignment. यहाँ हम center alignment अगर क्लिक करते हैं तो हमारा selected text बीच पेज के बीचों बीच आ जाएगा. Clicking on the right alignment tool, it will go towards the right side of the page. Justify tool will justify the text between left and right alignment. Now coming on to bullets and numbering tools. Just click where you want the bullets or number to be placed and then click the drop down arrow and select the bullets of your own choice. You can see here the bullets have been placed over here. You can change these bullets to number or any other bullets at any time whenever you want. Just scroll through the different options and choose one of them of your own choice. You can see here. Now coming on to other tool, that is multi-level tool. You can see here these are the multi-level options. Suppose that India के अंडर में आपको country लिखना है. We will write the text. We will click the place where we want the listing and then we will scroll through and apply the bullets. And you can see now a list with a hierarchy or pattern has been formed over here. Now the next tools are decrease indent and increase indent tool. हम सब देखते हैं कि किसी भी पेज के लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, ऊपर नीचे कुछ ब्लैंक स्पेस छोड़ा गया होता है. दैट स्पेस इज नोन एज मार्जिन. इस मार्जिन को घटाने बढ़ाने के लिए एमएस वर्ड में वी हैव गॉट दीज टूल्स, इंक्रीज इंडेंट एंड डिक्रीज इंडेंट. यू कैन ऑल्सो यूज रूलर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट. पैराग्राफ टूल्स दैट इज इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट एट पैराग्राफ टूल्स यूज करने के लिए टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है एंड देन आपको टूल्स को क्लिक करना है. Decrease indent will decrease the size of the margin and increase indent will increase the size of the margin. You can see here. आप increase करते जाइए, margin का space बढ़ता जाएगा. Decrease indent यूज करेंगे तो margin का space घटता जाएगा.
नाउ कमिंग ऑन टू लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग ये एक ऐसा टूल है जो आपको किसी भी पैराग्राफ में जो लाइंस होते हैं उनके बीच के स्पेस को घटाने और बढ़ाने में हेल्प करता है। यू जस्ट हैव टू सेलेक्ट द पैराग्राफ एंड स्क्रॉल थ्रू द ऑप्शन ओवर हियर, और आप लाइन की स्पेसिंग घटा बढ़ा सकते हो। यू कैन सी हियर। Next tool which we have to learn about is the shading tool. We can add different shades to the space occupied by the selected text, paragraphs and pages. Just select the text and click on the drop down arrow and select the color of your own choice from the palette. आप देख सकते हो यहाँ पे ये पूरा का पूरा टेक्स्ट शेड हो गया. Now the next tool is border tool. Just select the text and then go to the border tool, click the drop down arrow and scroll through the borders options given over here. Suppose that we have used this outside border and you can see the border has been applied. अगर आपको ये border हटाना है तो no border click कर दो. select करने के बाद the border will get disappeared. You can opt for any kind of border scrolling through the options given over here. One more thing you can do, just scroll through the last of the menu and you can get a dialog box. Border and shading dialog box कहते हैं. यहाँ पे you have to apply certain settings. जैसे स्टाइल चेंज कर दो, कलर चेंज कर दो, विड्थ ऑफ द लाइन चेंज कर सकते हो आप. एंड यू कैन सी द प्रीव्यू ओवर द राइट साइड ऑफ द विंडो, डायलॉग विंडो. यहाँ आप देख सकते हो. ओके क्लिक करते ही आप देखोगे कि आपके चॉइस का कलर और विड्थ वाला बॉर्डर आ गया है. नाउ अगेन लेट्स गो टू द बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग विंडो. Let's add page order. The second tab contains the page border option. You can select and put any line over the page border, or also you can use the art or pictures to represent the page border. You just have to click on the art drop down arrow and scroll through the different pictures over here and select any one of them. And you can see in the dialog window or that preview has been changed, and by clicking OK you will be able to see कि हमारे पेज पे चारों ओर एक pictorial kind of border लग गया है. Now again let's go to the border and shading option. Now we will learn about shading. For that again let's select or put a border around any text, and we'll just go to the border and shading dialog window. We will put any box or line outside the text. Let's click OK, and then we will go again there. We will go to the shading tab. Just click the drop down arrow in the fill tab. कोई भी एक कलर आप अपनी चॉइस का यूज़ कर लीजिए. प्रीव्यू में आप देख सकते हैं. यू कैन ऑल्सो पुट एनी पैटर्न और स्टाइल. यू कैन चेंज द कलर ऑफ पैटर्न ऑल्सो एंड क्लिक ओके. यू विल बी एबल टू सी कि यहाँ इस बॉर्डर के चारों ओर जो टेक्स्ट है उसके चारों ओर शेडिंग हो गई है. Now coming on to the next tool, that is known as sorting tool. This is utilized in order to sort any text or number. If there is a number, it will sort ascending or in the descending order. If it is a text, it will sort in the alphabetical order. Let's select it. You can see here यहाँ 1564 है. जैसे हम क्लिक करेंगे सॉर्टिंग विंडो, हमारे सामने एक सॉर्ट टेक्स्ट का डायलॉग विंडो आएगा. वी हैव टू चेंज दिस सेटिंग. क्लिक ओके. आप देखोगे ये सॉर्टेड हो गया डेटा हमारा 1456. लेट्स पुट इट ऑन टेक्स्ट एज वेल. जस्ट क्लिक इट एंड डू द सेटिंग. क्लिक ओके. और आप देखोगे हमारा टेक्स्ट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट हो गया है. लास्ट इज शो और हाइड tool. This tool it is utilized to place this symbol around any paragraph. This was the last tool of paragraph group. I hope you have understood all the concept clearly. Thanks a lot to all of you.